Started now. Okay, fine. Okay, good morning to all. I, Ms. Nidhi Sharma, extends a warm welcome to the August gathering at the virtual portals of Mehechand Mahajan, DAV College for Women, Chandigarh, a premier institution of higher education for women in the region. This college is a living tribute to the memory of noted legal luminary Justice Mehechand Mahajan, former Chief Justice of India. Since its inception in 1968, the college has completed its 52 glorious years decorated with meritorious achievement in every field of learning. Along with academic excellence, our sportswomen have bagged Women's Sports Journal Efficiency Shield for a record of 39 times and made their mark at both national and international arenas. The college has been ranked among the top institutions of the country by national dailies and popular magazines such as India Today, The Week, and The Tribune. The college has a distinction of being the cleanest college in the residential category in Swachhata ranking of MHRD Government of India. It was re-accredited with A grade by NAC and awarded third rank in India in the Best Citizen-led Initiative by the Ministry of Housing and Urban Affairs in the prestigious Swachh Sarvekshan 2019. We as an institution strongly believe in educating beyond course content to make our students competent, efficient, and resourceful. Following this vision today, the PG Department of Commerce have organized an interactive online session on processing of e-filing of returns. It will be taken by CA Amitosh Singh, ex-chairperson of Chandigarh branch of NIRC of ICAI. It is my privilege to introduce you all to our distinguished resource person, CA Amitosh Singh. Mr. Singh is a fellow member of ICAI and ex-chairman of Chandigarh branch of NIRC of ICAI. He have been part of the managing committee of the Chandigarh branch and have remained secretary in the year 2018 and 19 and chairman for the year 2020-21. Sir has more than 15 years of experience and has been practicing in the field of direct taxes and providing tax planning, tax strategies, tax advisories to various local and international clients. Academically, Sir have remained active throughout these years and shared taxation-related knowledge at various platforms of Institute of Chartered Accountants of India, in private colleges, government institutes, Regional Training Institute of Income Tax Department. Sir, we are extremely honored and elated to have a personality of your level with us, and I welcome you with a virtual bouquet full of respect and admiration. I also welcome my respected colleagues and the enthusiastic students. And sir, I would now request you to take over the session. Thank you so much. Thanks a lot, Nidhi ma'am. Thanks a lot for the wonderful introduction. And first of all, I thanks a lot to MCM DAV College and Principal Ma'am Nisha Bhagawaji, who gave this honor to put up this presentation before the young and dynamic students who are going to be the future lights for in commerce. And I personally am thankful to Jyoti ma'am, Ritu ma'am, as well as you, Nidhi ma'am, for being the coordinators and arranging this presentation. Definitely, it's a great initiative, I think, from the students' perspective. If we look around and the way we were just discussing that, you guys being into academic, you teach the minute provisions of the law to the students, but when it comes to the practical aspect, so when they clear their BCom or when they clear their MCom and they enter into a job from the job perspective, at that time definitely when they come over and we ask as an entrepreneur, as a chartered accountant, if some BCom student comes over to me and says, "Sir, I want to join your organization," and if I ask some basic questions from them, definitely as far as academic is concerned, they are well equipped. But when it comes to the softwares, when it comes to the interface, when it comes to the websites, how they look like, कहाँ पे हमें income tax return को file करना है, कहाँ पे GST return को file करना है, all these kind of practical knowledges, I think that is where sometimes a student gets slack. And I think it's a great initiative from the college side that they are providing this practical viewpoint to these students. And definitely I will try my level best to touch upon the key points which are part of today's presentation. As discussed, today's presentation is primarily focused on
income tax returns, specifically the Form 1. So before I begin my presentation, let me share the presentation with you guys. I think everybody must be, this presentation must be visible to everyone. Yes, Right. So primarily today's deliberation is specifically to understand the returns which are required to be filed by a salaried employee. We all are very much aware that being in income tax, there are few different kind of persons and different kind of incomes which can be earned by a person. So person की कोई ना कोई एक definition दे रखी है जिसमें individual, HUF, firms, companies, trusts, AOPs ये सब आती हैं, ठीक है, जो बच्चों ने पढ़ा होगा, मैम आप सबने उनको पढ़ाया हुआ है. Now the point comes कि all these kind of persons earn primarily 5 kind of incomes, which are basically the salary incomes, the house property income, PGBP, business or profession income, capital gain income, or from income from other sources. Now section 139 onwards we start understanding कि हमें return file करना होगा. Point क्या है कि we have a financial year in which there is an income which we have earned. This financial year starts from 1st April till 31st March. So now during this whole year, whole financial year, there must be different kind of incomes being earned. As there are different kind of income, the form filing also to be used to declare these incomes is also different, right? So there are different forms which are required to be filled if you are earning such kind of income, right? So today we are talking about salaried. Now salaried employees generally, we all understand a salaried person will be an individual only. So there is not a possibility कि भाई एक HUF या एक LLP या एक कंपनी को मैं salary income deliver कर रहा हूँगा. So as a employer, I am giving salary to somebody. That somebody has to be individual. Now that individual have to file a return. This is what we are going to understand today. So I am not going to touch base the various provisions which are there, how to compute the salary income. But I am just trying to, today we are just trying to understand how that salaried income has to be filled, has to be declared in the annual ITR, right? So two aspects will be touching in this point. Firstly will be the 115 BAC, which was the last year amendment. आप सभी को जब आपने बच्चों ने जब पढ़ना सीखा स्टार्ट किया होगा और इनकम टैक्स की रिटर्न्स पढ़ रहे होंगे और कंपटीशन बनानी सीखी होगी, तो जब आपने कंपटीशन बना ली उसके बाद आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास अलग अलग टैक्स रेट्स हैं फॉर डिफरेंट पर्संस. एंड वी ऑल रिमेंबर दैट फॉर इंडिविजुअल्स द टैक्स रेट इज जनरली द स्लैब रेट. वो 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख वाला अपन एक स्लैब रेट पढ़ा होगा ना कि 2.5 लाख तक कुछ नहीं होता, 2.5 से 5 में 5% होता है, फिर 20% होता है, फिर 30% होता है, राइट? तो लास्ट ईयर व्हाट हैव हैपेंड इज दैट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, द CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कवर करता है, और CBDT के ऊपर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर साल अपना बजट लाता है 1st ऑफ फेब में. तो 1st ऑफ फेब को लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या कहा, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, उन्होंने एक नई प्रोविजन डाल दी, दैट वाज ऑफ 115 BAC. नाउ दिस इज ए opportunity being given to the various individuals across the country कि भाई कॉम्प्लिकेटेड मत करें हम चीजों को, आपके लिए हम एक इजी सहज फॉर्म बना रहे हैं और एक इजी टैक्सेशन बना रहे हैं. हम सब बच्चों ने जब इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स पढ़ना सीखा और सैलरी की कंपटीशन पढ़नी सीखी, तो हमने देखा कि वहां पे एक सेक्शन 15 होता है जो चार्जिंग सेक्शन होता है, फिर सेक्शन 16 की कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस होती हैं, फिर सेक्शन 17 में हम पर्क्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं, एंड देन फाइनली वी कम ओवर टू अ कंपटीशन जिसमें हम कहते हैं कि दिस इज माय सैलरी इनकम, जिसमें मेरी बेसिक सैलरी भी है, मेरे अलाउंसेस भी हैं, मेरे पर्क्स भी हैं, और जो मुझे माफ है डिडक्शन, वेरियस काइंड ऑफ डिडक्शन जो मेरे पास है वो भी मैं लेस करके देन फाइनली आई कम ओवर टू अ फिगर. नाउ इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. हमारे इंडिविजुअल्स जो हैं इंडिया में वो कहते हैं कि हमें तो सरल चीज चाहिए, सबसे आसान चीज चाहिए.
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हम एक नए रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। वो रिफॉर्म्स क्या है कि इनकम टैक्स लॉज में जितनी भी डिडक्शंस और जितनी भी एग्जम्पशंस हैं, आने वाले टाइम पे हम उनको खत्म कर देंगे। We all understand that we are a developing country, right? So in 1991, when Shri Manmohan Singh ji was our finance minister, so our economy got opened. The outsiders were allowed to come in and invest. FDI, जिसको हम कहते हैं foreign direct investments, they started coming in, right? So when they started coming in, हमें उनको कोई ना कोई इंसेंटिव देना था। वो इंसेंटिव हम जनरली डिडक्शंस या एग्जम्पशंस की शेप में देते हैं, ठीक है, जिसको हम इनकम टैक्स में कई बार प्रॉफिट बेस्ड इंसेंटिव या कैपिटल बेस्ड इंसेंटिव कह देते हैं। कि अगर आप इंडिया में इस जगह पे अपना प्लांट लगाएंगे, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे ना, तो हम आपका सारा प्रॉफिट माफ कर देंगे। नाउ दिस इज अ प्रॉफिट बेस्ड इंसेंटिव, ठीक है। नाउ इट्स अ लिक्विडेटिव ऑप्शन, इट्स अ लिक्विडेटिव थिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुश किया टुवर्ड्स द ग्लोब कि भाई इंडिया में आओ और तुम यहाँ पे पैसा लगाओ, तुम यहाँ पे काम करो, तुम हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो और हम आपका प्रॉफिट माफ कर देंगे, हम आपको ये डिडक्शन दे देंगे, हम आपको ये एग्जम्पशन दे देंगे। Now this all happened since 1991 and we have almost crossed 30 years now. Government now thinks कि यार ये सारी एग्जम्पशनों को खत्म करना शुरू करते हैं, क्योंकि जितनी ये एग्जम्पशंस होंगी, जितनी ये डिडक्शंस होंगी, उतनी ही डॉक्यूमेंटेशन बढ़ती जाएगी। There will be a CS certificate required to certify कि हाँ जी इसने डिडक्शन ठीक ली है, इसने एग्जम्पशन ठीक ली है, उसको ये फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा, उसको वो फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट विद टाइम थॉट कि हम इसको सबको खत्म करना शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने लॉ में कहीं ना कहीं खत्म करना भी शुरू कर दिया है। सनसेट क्लॉजेस जैसे जो चीजें होती हैं कि सनसेट क्लॉज डाल दिया कि इसके बाद हम आपको डिडक्शन ही नहीं देंगे, वो सब इसी के तहत है। बट साथ साथ उन्होंने फॉर्म्स में भी एक सिंपल से सिंपल जब आईटीआर फॉर्म भी फाइल करना है, उनमें भी इन चीजों को खत्म करने की बात कही है। और उनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज के दिन में इंडिविजुअल्स की, कि इंडिविजुअल्स को भी उन्होंने एक ऑप्शन दे दी कि इफ यू फील लाइक कि भाई देयर इज अ बेटर ऑप्शन देन ऑल दिस कॉम्प्लिकेटेड थिंग, जिसमें आई हैव टू सी, मैंने डिडक्शन भी लेनी है, डिडक्शन के लिए मुझे कोई कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी देनी होगी। आई टेक एन एग्जांपल, सैलरी में आप एचआरए पढ़ते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस का एक डिडक्शन का फॉर्मूला होता है ना कि लीस्ट ऑफ द 3 में हम आपको देंगे। तो उसके लिए ड्यूरिंग द एकेडमिक टाइम तो हम समझ लेते हैं कि जी भी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, सॉरी एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, ठीक है, रेंट रिसीव्ड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, और देयर इज अनदर फॉर्मूला 40% और 50% ऑफ द सैलरी। ये तो हमने पढ़ लिया, बट अब हमने अगर उसको प्रैक्टिकली क्लेम करना है तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको रेंट रिसीट जो है वो अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर 8,000 रुपए प्रति महीना से ऊपर है तो भाई आप उसका पैन नंबर भी डिक्लेयर कीजिए लैंडलॉर्ड का। अब हमें हमारे इंडिया में तो पता ही है कि जुगाड़बाजी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट चलता है। तो जब ये प्रैक्टिकल बात आ गई, थ्योरेटिकली तो आपने ये चीज नहीं पढ़ी, बट जब मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूं तो प्रैक्टिकल में ये तंगी आती है कि जब मैं अपने एम्प्लॉय को कहता हूं कि भाई लाओ अपना रेंट रिसीट लाओ, तभी तुम्हें एचआरए की एग्जम्पशन दूंगा, और वो इधर और उधर देखता है कि मेरे पास तो रेंट रिसीट है ही नहीं, मैं तो अपने ही घर में रह रहा हूं, पर मेरा एम्प्लॉयर मुझे एचआरए दे रहा है, तो मैं एग्जम्पशन कैसे लूं। तो गवर्नमेंट ने इन चीजों को सरल करने के लिए कि भाई आप इस कॉम्प्लिकेशन में मत इन्वॉल्व हुईजिए, you can avoid all this stuff, they gave you another option which was covered under 115BAC. So 115BAC is what basically it's an alternative tax regime which is specifically for individuals and HUF, nobody else, only individuals and HUF. So persons like us who are individuals and HUFs, उनके लिए ये सेक्शन बना है। This section came last year and which is applicable from this year onwards. इसने एक नया टैक्स स्लैब दे दिया। इसने टैक्स स्लैब क्या दिया, ये जो हमारे आपको सामने खड़ा है कि भाई अगर आपकी 2.5 लाख तक की इनकम है तो नील, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल इनकम, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शंस, द टोटल इनकम। अगर 2.5 लाख तक है तो नील, अगर 2.5 से 5 है तो 5%, 5 से 7.5 है तो 10%, 7.5 से 10 लाख है तो 15%, 10 लाख से 12.5 है तो 20%, 12.5 से 15 है तो 25%, एंड अबव 15 है तो 30%, right? And we all know 30 is the maximum marginal rate. Initially this 30% in a normal slab rate जो अभी तक हमने पीछे पढ़ा हुआ था, that was
आफ्टर 10 लाख 30% लग जाता था, बट अब अगर हम देखें तो 15 लाख के बाद 30% लगेगा, राइट? सो दिस इज द न्यू टैक्स स्लैब विच दे हैव गिवन अस एंड दे हैव टोल्ड अस आपके ऊपर ऑप्शन है, डू यू वांट टू अवेल दिस और यू वांट टू रिमेन इन द ओल्ड टैक्स रेजिम ओनली. So this option is with me, right? This option is with me. We all know initially the old tax regime which was there, उसमें क्या था, वो 2.5 लाख, फिर 5 लाख और फिर 10 लाख के ऊपर 30%, right? 2.5 लाख तक कुछ नहीं था, 5 लाख तक 10% रहता था, 5 से 10 20% रहता था और 10 से ऊपर 30% रहता था, right? But this year they have given us an option that you can choose whether you want to go ahead or not. Now, when we say we can choose, that means what? There are pros and cons. There are pros and cons. So, as an individual, as a salaried employee, right? Or I will say as an individual, I have to see that whether those pros and cons are favorable to me or not. If those are favorable to me as per the new tax regime, I have the option to opt for the new tax regime. But if that pros are not good for me, and I have more cons in that, then definitely I will go back with the old tax regime. Now, what are those points which I have to kept in mind before I take a decision कि भाई मैंने new regime में जाना है कि old regime में जाना है? Let's understand those points. Firstly, any loss under house property cannot be set off with any other income. We all know loss from house property जो है that can be set off against income from salary to the extent of 2 lakh. Right? So if I have a salary income of 10 lakh rupees and I have a house property also on which I am paying an EMI, जिस पे मैंने लोन ले रखा है, and I am paying an interest, so I am claiming an exemption under section 24B for that interest. So there is a negative figure in front of income from house property. That means there is a loss from house property during that relevant year, and I am a salaried employee also, so I can deduct that loss from salary. But when I talk about new tax regime, law कहता तो मैं कोई डिडक्शन कोई एग्जम्पशन नहीं दूंगा, वो कहता मैं आपका ये लॉस भी सेट ऑफ नहीं होने दूंगा. So I have to do what? I have to make a table and I have to see कि मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है, सपोज करो मेरी अगर 10 लाख की इनकम है, सैलरी इनकम है, मेरा एम्प्लॉयर मुझे 10 लाख रुपए देता है, तो I note down that 10 lakh rupees. Now I have to find out which all exemptions I am claiming. First is the loss from house property. I was paying the 30,000 rupees per month EMI to the bank against the home loan. तो उसमें 2 लाख रुपए का तो मेरा इंटरेस्ट ही था, वो मुझे बेनिफिट मिलना था, तो आई नोट डाउन दैट. मैं देखूंगा ना, मैं पहले इवेल्युएट करूंगा कि मेरा नुकसान कितना हो रहा है, राइट? व्हाट दे से, इफ आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई एम एन इंडिविजुअल, then they say any brought forward losses or any unabsorbed depreciation. We all know brought forward losses 8 साल के लिए मुझे अलाउ करते हैं वो आगे. Unabsorbed depreciation infinite period के लिए मुझे अलाउड है, वो पुरानी मेरी कहीं चलती आ रही है, तो लॉ कहता मैं आपको वो भी नहीं दूंगा. I won't be giving you that also, right? So another thing, we have the option to opt this. Before I go to this, I take it forward this part. If I am a salaried person, we all know there is a standard deduction 40,000 50,000 वाली अब होगी थी ना standard deduction. नहीं तो पहले कई different 10 14 2 में there were different kind of allowances जिनकी हमें exemption मिलती थी. तो लॉ ने ना उस चीज को सबको खत्म कर दिया. वो कहता लो जी एक standard deduction ले लो, 50,000 रुपए की standard deduction ले लो आप अगर आप salaried employee हो. तो अगर मेरी 10 लाख रुपए सैलरी है तो मुझे 50,000 रुपए standard deduction भी मिलनी थी. अब लॉ कहता इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर टैक्स रिजाइन, न्यू टैक्स रिजाइन, देन दैट क्लेम इज आल्सो नॉट अवेलेबल. इन पंजाब प्रोफेशनल टैक्स इज एप्लीकेबल, इन चंडीगढ़ प्रोफेशनल टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल. 2400 रुपया मुझे उसकी भी डिडक्शन मिलती थी, लॉ कहता वो भी नहीं दूंगा मैं. लीव ट्रेवल अलाउंस once in twice, I think twice in 4 years, right? वो LTA मिलता था ना, if I travel, तो हमें वो लीव ट्रेवल अलाउंस उसका हम बेनिफिट ले सकते थे एम्प्लॉयर को. लॉ कहता मैं वो भी नहीं दूंगा, विच इज ऑन एक्चुअल बेसिस. HRA जो भी पॉइंट मैंने टच किया, इवन HRA नो एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल. सो इफ in this 10 lakh rupees of salary I have 3 lakh rupees of HRA being received from the employer,
मैं वो 3 लाख के अगेंस्ट अपनी रेंट रिसीट्स दे के एग्जम्पशन क्लेम करता था, लॉ कहता वो भी नहीं देंगे। चाइल्ड माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, दिस वर वेरी नॉमिनल 200 रुपए महीना, ऑल दैट स्टफ जो था, ठीक है। एनी अदर स्पेसिफिक अलाउंसेस व्हिच वर गिवन अंडर 1014(2) स्पेसिफिकली, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन आई हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन, राइट। चैप्टर 6 से डिडक्शंस, 80C 1.5 लाख की हम क्लेम करते हैं ना, जिसमें हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को डाल लेते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स को डाल लेते हैं, वो सब हम क्लेम करते हैं 80C में, वो हमें नहीं मिलेगी। 80D मेडिकल इंश्योरेंस हम करवाते हैं, उसकी हम डिडक्शन क्लेम करते हैं 80D में, वो नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन 80E हम क्लेम कर लेते हैं, वो नहीं हमें मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि चैप्टर 6A में जो 80 की डिडक्शंस हैं, वो हमें बेनिफिट वो नहीं हमें लेने देंगे, राइट। So we have to figure out whether these all exemptions will hamper my calculations or not. This is what we have to see. Some of the exemptions they are allowing here. I believe this is 1014(1) when we talk about transport allowance, conveyance allowance और daily allowance, right? तो 1014 में 2 पार्ट के allowances होते थे, 1014(1) होता था और 1014(2) होता था। तो जनरली गवर्नमेंट ने 1014(2), क्योंकि 1014(2) इज मोर ऑफ अ पर्सनल नेचर, 1014(1) इज प्राइमरली ऑफ द ऑफिशियल नेचर, कि मैं ऑफिस के काम के लिए कहीं चला गया, उसका मुझे डीए मिला, तो वो मुझे डेली अलाउंस एग्जम्प्ट हो जाता था अगर ऑन एक्चुअल बेसिस। तो लॉ कहता वो ले लो आप, क्योंकि वो तो एक्चुअल बेस पे है ना, मैं अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करने जा रहा हूं, तो लॉ ने उस चीज को समझते हुए कुछ डिडक्शंस को आपको सैलरीड पर्सन में अलाउ कर दी, विच आर बेसिकली द ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, daily allowances, any compensation received to meet the cost of travel on tour or transfer. So primarily all these 4 are the official expenses which are I am incurring to serve during the duty hours, right? तो इनको उन्होंने अलाउ कर दिया। Now I have a list जिसमें उसने कह दिया कि भाई आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन को भी हर प्रकार की डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट। सो इफ आई एम एन इंडिविजुअल एंड आई एम डूइंग अ बिजनेस, सो आई हैव अ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, देन इन दैट केस ऑल दीज काइंड ऑफ एग्जम्पशंस विल नॉट बी अवेलेबल टू मी। सो 32 की डेप्रिसिएशन की बात आ गई, एडिशनल डेप्रिसिएशन की, इन्वेस्टमेंट अलाउंस की बात आ गई, सेक्टर स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं सेक्शन 35AD में, राइट। इफ आई 35AD टॉक्स अबाउट कि अगर हमने कोई वेयर हाउसिंग लगा लिया तो उस पे जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ वो आप अपने पीएनएल में डेबिट कर लीजिए, ठीक है। ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, दीस आर देयर आर वेरियस डिडक्शंस व्हिच आर अवेलेबल टू बिजनेसमैन अंडर द पीजीबीपी हेड, कहता वो नहीं हम देंगे। If I have an IT company and I am claiming, say, we are in Chandigarh, so at SCZ, the Rajiv Gandhi Information Technology Park, which is there in our industrial area, वहां पे IT पार्क जो है हमारा, वहां पे जहां पे इन्फोसिस है और सामने DLF बिल्डिंग है, दैट इज SCZ एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो वहां पे जाके मैं अपनी एक IT कंपनी खोल लेता हूँ, आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम डूइंग अ बिजनेस, तो मैं अपने प्रॉफिट्स को एग्जाम्प्ट करना चाहता हूँ अंडर सेक्शन 10AA। But if I want to opt a new tax regime, then I cannot claim that deduction. So I have to find out all these things. I have to basically jot down all these things in my diary कि यार मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी सैलरी इनकम है, मैं देखूं क्या क्या इनकम मेरे पास आ रही है, किस किस प्रकार की मेरे पास डिडक्शंस है, अब फिर मैं कैलकुलेट करूं कि मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है। अगर वो टैक्सेबल, जो भी टैक्सेबल इनकम आएगी, अब उस पे मैं दोनों तरीकों से फॉर्मूला लगाऊंगा, ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग भी और न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग भी। अगर न्यू रिजाइम में आना है तो मैंने ये सारी डिडक्शंस को साइड पे कर देना है और फिर कैलकुलेट करना है। अगर ओल्ड में जाना है तो ये सारी डिडक्शंस देख के जो मेरे पास टोटल इनकम आएगी उस पे मैं अपना टैक्स स्लैब रेट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। नाउ एज एन इंडिविजुअल ये मुझे करना कब है, व्हाट दे से। Point number 3, due date of exercising the alternative tax regime. करना कब है? They say on or before the due date of furnishing the return of income.
So for individuals who have a non-tax audit cases, तो 139(1) क्या कहता है, हमारी डेट क्या होती है जनरली, जुलाई एंड, राइट. तो जुलाई एंड में से पहले पहले, बिफोर द ड्यू डेट of 31st July, उससे पहले पहले I have to take a call whether I have to go in the old tax regime or in the new tax regime. So that is the option which I have to figure out. Now is it what कि अगर मैंने ले लिया, अब मेरा मन नहीं कर रहा है यार, ले तो लिया बट मन नहीं कर रहा, now I want to go back, is that option open? Law says after exercising this option, is it possible to withdraw for the same? मन नहीं किया, मन कर गया तो ले लिया, मन नहीं किया तो नहीं लिया. लॉ कहता है ऐसा नहीं चलेगा. हमने उस चीज को डिफाइन कर दिया. व्हाट दे से, इफ यू आर हैविंग अ बिजनेस इनकम, then you cannot withdraw in any subsequent year. Once you have chosen this, then you cannot, because we have to understand under business income there are numerous kind of deductions available: capital expenditure deduction, profit linked deductions. So you cannot just play with the provisions of the law. मन किया तो ले लिया, मन किया तो नहीं ले लिया. लॉ मेकर ने कहा कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है then it is not possible, but if you don't have a business income, so we talk about the salaried employees, for them they say you can choose it every year, you can choose it every year, right? So अगर इस साल मुझे लगता है कि न्यू टैक्स रिजाइन ठीक है, तो I will go for new tax regime. Next year if I feel like I recalculate myself and I figure out कि नहीं यार old tax regime अच्छा है, तो I will opt for old tax regime, right? So this option is available with me, right? So I take two examples and then I will show you the link also जहाँ पे it is possible कि we go for how to look forward for this. Now this is the first example where my salary income is 14 lakh rupees. Now as I told you that we have to jot down which all various deductions I am eligible for, क्योंकि eligible तो मैं बहुत ज्यादा deductions में हूँ, मैंने ये देखना कि मेरी वाली कौन सी है इसमें से. Now I am presuming that this person is of 45 years of age और इस बंदे ने कोई हाउस रेंट अलाउंस, इस बंदे ने कोई इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं क्लेम कर रखा, लॉस. तो इसने 14 लाख में से ओनली वन डिडक्शन, दैट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 रुपए की जो उसको मिलनी ही मिलनी थी, वो क्लेम कर रहा है. ही इज वर्किंग इन पंजाब, तो उसके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स भी लाइबल है, तो 2400 रुपीज ये उसकी डिडक्शन क्लेम करता है. His gross total income comes out to 13,47,600. Now he is regularly saving under section 80C. 1.5 lakh is the upper limit there, so he will be reducing that 1.5 lakh more. Now his total income under old regime comes up to 11,97,600, whereas in the new regime it remains the same, क्योंकि उसमें तो मुझे कोई रिडक्शन मिलनी नहीं है. So my total income remains same, that is 14 lakh rupees. Now in the old regime I will calculate the tax as per old provisions, slab rates. In the new tax regime I will go for the new tax slabs, right? So now if I calculate that income tax, cess is applicable on both, you will find that in the new tax regime I am paying 1,69,000 rupees tax, whereas in the old regime I am paying 1,78,000. So there is a benefit of 9,651 rupees in the new tax regime. I will opt for new tax regime. Another option, example 2, now I have reduced my salary income from 14 to 10. Now what have happened? The rest of the things remains the same. But now what happens? In the new tax regime, I am paying 78,000 tax. In the old tax regime, I am paying 74,901. So I will go for the old tax regime because there is a tax difference of 3,099. So this is the call which I have to take. Now practically how I have to go for this? I am just a second. I'm sharing the income tax website, and I'm stopping this presentation as of now, and I'm sharing
another one. I think you are able to see this website. Yes, sir. You are able to see this website now? Yes, sir. Yes, Right. sir. So now this is the live website. It's the IncometaxIndia efiling.gov.in. It's the home page. It's the home page. Right. So on this website, on the very left hand side, third tab, tax calculator financial year 2020-21. This I have to click. This I have to click. Right. So on this, once I click this tab, this is the page which comes over, which says tax calculator for resident individual financial year 2021. I have to select my age, and now I have to estimate, put my annual income. Like the way I said, I have an income of say 25 lakhs. And I calculate the various kind of exemptions available with me, which is like loss from HRA, 50,000 rupees standard deduction, 2,400 rupees professional tax, 1,50,000 rupees my ATC. Say I have a HRA exemption also. I'm claiming HRA exemption of also of 1 lakh rupees. So I calculate all this. So it comes out with 2, 3, 3, 4.5 lakhs, 5 lakhs. So it comes out to be 502,400. Clear? Right? So in this exemption, I have calculated all that जो मैं ले रहा हूँ generally. मैं इंटरेस्ट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख क्लेम कर लेता हूँ, मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए क्लेम कर लेता हूँ, मैं 2,400 रुपीज प्रोफेशनल टैक्स क्लेम कर लेता हूँ, मैं 1,50,000 रुपीज एटीसी में क्लेम कर रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपीज अंडर एचआरए क्लेम कर रहा हूँ. It comes out to be 502,400. Now I have to simply compare those. Now as per this, if we see tax payable as per old regime is 428,251. As per new regime is 507,000. So tax benefit as per old regime is 78,749. So should I go for the new tax regime or for the old tax regime? This is right. So we go for the old tax regime, right? So this is the live calculator which is being provided by the income tax website. It is the live calculator being provided by the income tax website. I have to simply log in on the Income Tax India website, Income Tax India efiling.gov.in, right? And I will come to the home page. On the home page, on the very left hand side, third tab, tax calculator financial year 2020-21. यहाँ पे मुझे click करना है, and I have to simply fill the figures. So as a general, as a salaried person, I can say you need not go to the CA and look forward for the calculations. You can simply go to that page and calculate at your end only, right? तो CA के बाद जाके पहले बैठना, चाय भी पीनी है, फिर वो घंटा बैठाएगा भी, और घंटे के बाद बुलाएगा और फिर कहेगा वो ये तो गलत हो गया आपका. तो इट्स बेटर कि आप खुद ही अपना पेन डाउन कीजिए, जो 10 डिडक्शंस आप क्लेम करते हैं वो नोट डाउन कीजिए, वहां पे आप फिगर डाल दीजिए. You will get the option. Any doubts with this? So I go back to my presentation now. Right. So this is what we have understood here. The way we calculate on pen and paper, right? This is what this income tax website have helped us to understand. कि वहां जाइए और calculate करके आप आगे उसको ले जाइए. Okay. So this is how I've said that this is where we have to click on this link and it will take you to the page of comparison, right? So simply compare it and then you can take a call whether to opt for the new regime or the old regime, right? So now we come over to the ITR form. So practically as a salaried person, ITR form 1 is the one which is applicable on us if we are a salaried person. So let's understand ITR form 1. This type of ITR form is called as a Sahaj form. It is primarily for an individual taxpayer only. So not for the firm, not for the company, nobody else.
and definitely for a person whose income is less than 50 lakh rupees, right? Because if your income is more than 50 lakh rupees, then you have to give your statement of affairs. You have to submit your asset list to the government. But we have to understand now that the law, or I will say the enforcement authorities have become very stringent. Not the law. Law is the same as it was around 10 years back, 5 years back. ठीक है, आपकी मैम जब आपको पढ़ा रही है तो वो आपको बताएंगी कि ये प्रॉब्लम पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी. तो लॉ तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट उनको इन्फोर्स करने वाली जो अथॉरिटीज हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट हो गई. Now through these forms जो ये ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, ये पिछले कई सालों से आ रखे हैं, और these are almost paperless forms. So you have to simply, it's a data entry work. You have to simply enter your complete details and simply upload the return. No attachment. But does that mean कि गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पता चल रहा? गवर्नमेंट को सब कुछ पता चल रहा है, क्योंकि through that form and through some third party sources they are gathering a lot of information about us. मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कहाँ पे जा रहा हूँ, कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ. वी आर ऑल्सो टेको सेवीज. ठीक है, हम लोकेशन गूगल, हम सबके पास एंड्रॉयड या एप्पल फोन्स हैं, हम अपनी लोकेशन हमेशा लाइव रखते हैं, राइट? सो आर गूगल एट द एंड ऑफ द मंथ कैन प्रोवाइड अस विद द कंप्लीट डिटेल कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल हुए हो. सो दैट इंफॉर्मेशन समवॉट इज ट्रैवलिंग टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, राइट? तो वी कैनॉट से कि भाई गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पता. So we have to ensure that whatever has to be filled in the form, it is filled in a very correct manner, in a right manner, in a true manner. कि true and fair होना चाहिए. जो भी मैं लिख रहा हूँ गलत मत डालो, क्योंकि गलत डालोगे तो पकड़े जाओगे. Now income tax form type ITR form 1 जो है, ये 50 लाख की अगर इनकम से कम है आपकी तभी आप डालेंगे, क्योंकि अगर आपको ज्यादा है तो आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और सबमिट करनी होती है गवर्नमेंट को, जो इसमें आपको नहीं अलाउ. अब ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? एवरीवन हु इज अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, राइट? सो यू अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी और पर्सन. इफ यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी. आई एम अ लैंडलॉर्ड, आई हैव अ हाउस प्रॉपर्टी एंड आई एम अर्निंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो इफ आई हैव वन हाउस प्रॉपर्टी, ITR form 1 will be applicable. If I have two house properties, then ITR form 2 will be applicable and not ITR form 1. If during the year I have sold some immovable property, say मैंने घर बेच दिया, मैंने commercial property बेच दी, I will be having a capital gain income, either a loss or income. Then also I cannot file ITR form 1. I have to go to ITR form 2, right? So these are the additional things which will be there in ITR form 2, not in ITR form 1. So I am a salaried income person. I have only one house property. I don't have any capital gain income. I do not hold a property outside India because this needs to be declared in the ITR form. I earn only domestic income. There is no foreign income. Section 5, Section 6 वाली कहानी होती है ना, deemed to accrue, और तो मेरे पास कोई foreign income नहीं है, सिर्फ domestic income है. And I am earning interest from various kind of FDRs, जो income from other source में हम declare करते हैं. Right? And I don't have any windfall incomes in that income from other sources. तो मेरी income from other source में किस प्रकार की income होनी चाहिए? Generally the interest incomes, the dividend income, generally those kind of incomes, dividend interest incomes, but not the say gambling या वो कौन बनेगा करोड़पति से मुझे पैसे आ गए, तो that's a windfall gain. उसके लिए फिर ITR form 1 नहीं चलेगा. तो ITR form 1 तभी चलेगा अगर मैं एक सिंपल सैलरीड पर्सन हूं, सिंपल एक ही प्रॉपर्टी है मेरे पास, कोई कैपिटल गेन नहीं है, कोई बाहर मैं होल्ड नहीं कर रहा हूं प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इनकम है. मेरी एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 से अधिक नहीं है. हमें पता है ना कि अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक होगी और मेरी नॉर्मल इनकम जो 2.5 लाख से ऊपर होगी, तो फिर क्या होता है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम भी हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो चीज भी नहीं है. तो अगर ये सब कुछ है तो देन मैं ITR form 1 फाइल करूंगा. ITR form 1 फाइल करूंगा. Now when I have to file this form, this ITR form 1 is very easy to file and it can be filed online. Same way जैसे हम वेबसाइट पे गए थे
उसी वेबसाइट पे हम दोबारा जाएंगे और वहीं पे हम फिल कर सकते हैं. इट्स अ simple data entry work which I have to do. So all those students who are listening me, आप एक काम जरूर करना इस डिलिब्रेशन के बाद, जब कभी भी अगर आपके मम्मी या पापा कोई भी सैलरीड एम्प्लॉइज हैं तो उनकी रिटर्न इस बार खुद भर के देखना. राइट, दिस इज हाउ विल बी एबल टू प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस व्हाट इज हैपनिंग. राइट, तो अगर आपके मम्मी पापा कहीं पे भी लोकल प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब्स में हैं एंड दे आर हैविंग एन इनकम मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज 2.5 लाख रुपए, तो फिर आप उनकी रिटर्न खुद ही फाइल करना. वो पापा आई विल फाइल, मम्मा आई विल फाइल, I will go to the website and I will file, right? Now, but when I have to file, then I have to see कि भाई मैं फाइल कैसे करना है उसको फाइल करने के लिए I have to keep certain things in front of me. ठीक है ना, तो मैंने कुछ बनाना है तो उसके लिए मेरे पास कुछ होना भी तो चाहिए ना सामने. वो होना क्या चाहिए, मेरे पास एक फॉर्म 16 होना चाहिए. आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय, दैट मीन्स व्हाट, माय एम्प्लॉयर इज गोइंग टू इशू फॉर्म 16 टू मी. ठीक है, आजकल जो फॉर्म 16 है वो ऑनलाइन डिजिटाइज फॉर्म में आता है, पीडीएफ फॉर्म में आता है. वो फॉर्म 16 आपने मम्मा पापा को पूछना है कहां पे पड़ा है, वो कहेंगे मेरी मेल पे आया है या मुझे प्रिंट आउट मिला है, लाओ जी वो दे दो मुझे. दूसरा एक फॉर्म 26AS है, वो भी अब हम समझेंगे क्या है फॉर्म 26AS, जो डिटेल्स देता है वेरियस काइंड ऑफ टीडीएस व्हिच हैज बीन डिडक्टेड अगेंस्ट योर इनकम्स. उस 26AS को भी मैंने रखना है. वो 26AS ऑनलाइन डाउनलोड होता है, तो वो भी मैंने डाउनलोड कर लेना है. सो मेरे पास फॉर्म 16 आ गया, मेरे पास फॉर्म 26AS आ गया. किसी प्रकार की कोई ऐसी रसीद, मैंने डोनेशन की थी लास्ट ईयर, मैंने पीएम केयर्स फंड में डोनेशन कर दी, मैंने कहीं और रिलीफ फंड में डोनेशन कर दी, या मेरे पास कोई एनजीओ है जिसकी ATG की डिडक्शन है, मैंने उसको कर दी डिडक्शन, मैंने किसी और प्रकार की इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, मैंने उसकी रसीद अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं की थी, तो उसने मुझे 1.5 लाख वाली डिडक्शन नहीं दी फॉर्म 16 में. अब मैं क्लेम करना चाहता हूं, वो सब कुछ रख लो. ठीक है, अगर नहीं भी है, जब आप फॉर्म 16 देखेंगे तो आप वहां पे देखेंगे 80C के आगे कितनी फिगर लिख रखी है एम्प्लॉयर ने. सपोज करो वहां पे उसने लिख रखी है 1 लाख रुपीज, तो आप अपने मम्मी पापा को पूछ सकते हो, अपने ब्रदर सिस्टर जिनकी टैक्सेबल इनकम्स हैं, पूछ सकते हो कि भाई ये 1 लाख क्यों है, यू आर एलिजिबल फॉर 1.5 लाख, तो डिफरेंस कहां पे है. वो कहेंगे नहीं है मेरे पास, या थी ये मैं भूल गया. तो आपने सिंपली उनको कहना है कि देखो जी, अगर तो आपने अपना रिफंड लेना है टैक्स का और उसका 10% मुझे इनकम देनी है, मेरी पार्टी हो जाएगी, तो मैं आपको रिफंड दिलाता हूं. तो रिफंड कैसे दिलाऊंगा वो मेरी टेंशन है, बट आपने उनसे वो 50 का जो गैप है उसकी रिसीट्स मांगनी है कि लाओ भी वो रिसीट्स दे दो मुझे, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिकम्प्यूट योर नाउ रिटर्न. व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न आई विल रिकम्प्यूट द फिगर्स. तो आपने उस प्रकार की जो भी रिसीट्स हैं वो अपने पास रख लेनी है. पैन कार्ड अपने पास होना चाहिए. ठीक है जी, पैन कार्ड इसलिए होना चाहिए, इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम फाइलर डेफिनेटली आई रिक्वायर अ पैन कार्ड बिकॉज मुझे रजिस्ट्रेशन करनी होगी. एंड एनी काइंड ऑफ बैंक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स, इंटरेस्ट ऑन एफडीआर आता है ना, तो उसका एफडीआर का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आ जाता है, बैंक से ले आते हैं, प्राइवेट बैंक या शेड्यूल बैंक से, आप उनसे वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी मंगवा लीजिए. ठीक है, जनरली असेसीज क्या कहते हैं कि सर आप खुद ही देख लेना जी, बट आई स्टिल विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो आप जरूर अपना आईटीआर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फॉर्म अपने बैंक से जरूर लीजिए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस समटाइम्स कि कई बार उन्होंने सब कुछ पूरा इंटरेस्ट नहीं डिक्लेयर किया होता जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था 26CS में. सो इट्स बेटर एट योर एंड कि आप उनसे वो सर्टिफिकेट ले लीजिए, सो दैट यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि माय एफडी वाज ऑफ 10 लाख रुपीस, आई हैव अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, तो मेरी जो सालाना इंटरेस्ट इनकम है दैट शुड बी 60,000 रुपीस. तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, योर बैंक ओनली फाइल्स 45,000 एज इंटरेस्ट इनकम, 15,000 दिखानी भूल जाता है. ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी तो उनके अकाउंटेंट ने या उनके टैक्स एडवाइजर ने ही रिटर्न फाइल करनी है ना, तो वो मिस हो जाते. तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उसको रखिए. Now this is how the form looks like. Now this is in the printable shape, right? This is not in the filing shape. This is in the printable shape.
कि जब मैं फॉर्म पूरा फिल कर लूंगा और उसका प्रिंट बटन दबाऊंगा या अपलोड बटन दबाऊंगा, तो जब अपलोड बटन दबाऊंगा तो मेरा फॉर्म अपलोड हो जाएगा, फिर मैं वो डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं, तो जब आप डाउनलोड करोगे तो ऐसा प्रिंट आएगा, इस शेप में वो प्रिंट आएगा, राइट। तो ये बेसिकली वो सब कुछ कहेगा। ये जो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कही जा रही है, ये अभी हम समझेंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है, वो हम समझेंगे जब हम उन पीपीटीज पे जाएंगे देखने के लिए, जब हम फाइल कर रहे हैं। बट दिस इज हाउ द ITR फॉर्म विल look like when I finally upload it and take the print out, right? So it's a very small form as compared to very big form जो ITR 3, ITR 4, ITR 5 में होते हैं, वो 20-20, 22-22 पेजों के होते हैं। ये बहुत ही छोटा फॉर्म है। पार्ट A जो है, that is the general information only, general information about me, what kind of return I am filing, whether I am a resident or a non-resident, general information. Part B is my gross total income, right? जो GTA कैलकुलेट करने के लिए हमने सारी फिगर डाल दी थी ना, वो हम यहाँ पे डालेंगे। Part C is my deductions, various kind of deductions which I am claiming, right? Part D is the computation of tax, वो tax rate applicable करेगा। Part E is my bank details, ठीक है? If I am claiming any refund in my return, अगर मेरा end of the day tax payable बजाय tax refund आ जाता है, तो I have to, in Part E, I have to upload my bank account details, जिसमें I will get the refund. Nowadays इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट होता है, ECS होता है। अब वो चेक्स नहीं आते, पहले घर पे चेक्स आते होते थे। अगर मेरा रिफंड ज्यादा, टैक्स ज्यादा पे कर दिया और रिफंड आ रहा है, तो गवर्नमेंट मुझे चेक इशू, डिमांड ड्राफ्ट इशू करके घर पे भेजती थी। Nowadays everything is online, ECS, right? And next schedule is regarding the TDS schedule, the advanced tax, the self-assessment tax schedules. I believe you guys are, I hope you guys are very, very intelligent and you are well aware of what is advanced tax, what is self-assessment tax, right? This all details will come here. This all details will come here. And lastly is the verification, where I confirm that whatever I have filled up there, that all is best to my knowledge and belief, true and fair. It is true and correct. मैंने कुछ भी झुटलाया नहीं है, मैंने कुछ भी झुटलाया नहीं है। So this is my form which has to be filled by me. Now we have to go to the website and understand कि वो fill कैसे करना है, ठीक है जी। उसमें मेरा एक concern क्या है? Now what have happened is इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो नई वेबसाइट लॉन्च कर रहा है। आई एम टेकिंग यू बैक टू द income tax website once again, right? So I'm stop sharing this, and I'm just a second. So now I go back to the. Are you able to see the website? Yes. Right. Yes. So now we are back to this. Right now, this is the very first page which comes over, right? So this first page, if you can just read through this is the latest notification which I have done, जो मैंने भी highlight की है, that income tax department is going to launch its new e-filing portal, that is incometax.gov.in on 7 June 2021. The existing portal of the department at www.incometaxindia-efiling.gov.in would not be available to taxpayer as well as other external stakeholders for a brief period of 6 days, starting from 1st June to 6th of June, right? So we are on our date today is 3rd of June. So we are in the middle of this delay, right? So as of today, if I say, if I have to file the return, so I wanted to show you online, but no worries, I have put that all in the presentation. But what happens once I reach this page, if I am already a registered user, so I click on this login here, right? So if I click on this, as of today, we are getting this page which says there are another 3 days left for the launching of the new website. Now through this PPT presentation which I'm taking over, we will see what all is there in this, under this page, right? So I take you back to that page, right? So I take you back. I believe the PPT is now visible to you all. Yes, sir.
right? So this is where we go back, right? So this is what we have seen, that page, the first page, the interface of Income Tax India e-filing, right? Now, all those जो regular taxpayers हैं और regular returns file कर रहे हैं, वो तो register users पे click करेंगे, log in here. But all those who are fresh, first timers, they have to first register themselves. They have to first register themselves, and only then they will be able to move forward. So if I am the first timer, I don't have the user ID password. If I don't have the user ID password, I click on the register yourself. This register yourself takes me to this registration page. Now I have to select what kind of type of person I am. I am a salaried person, so I will click individual. Once I click individual, the page takes me to the basic information which they require from my side. So now for this, I require the PAN card. Now for this, I require the PAN card. Now on this page, if you see, there is a PAN, there is a surname, there is a date of birth, there is a residential status, जिनके आगे red star mark किया हुआ है, red star mark किया हुआ है. So I have to keep that PAN card in front of me. I have to find out the PAN number there, and I have to fill that PAN number here. Now we all know in our form generally क्या होता है, जब कभी पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम का ऑप्शन दिया होता है. तो जो सर नेम होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन योर पैन कार्ड द लास्ट नेम विच विल बी देयर, दैट इज द सर नेम. वो आपने, अगर मेरा जो मेरा नेम है दैट इज लिमिटेड, अमितोष सिंह, देन माय लास्ट नेम, सर नेम विल बी व्हाट, सिंह, and my first name will be Amitosh. Middle name will be empty. But if I write my name as Amitosh Singh Kamboj, then my surname comes Kamboj, my middle name comes Singh, and my first name comes Amitosh. So I have to fill all that stuff. Date of birth also, which is mentioned on the PAN card, only that has to be filled there. Only that has to be filled here. So this PAN number, this surname, and date of birth, this all must be picked from the PAN card only. ठीक है, इधर उधर नहीं जाना, कहीं मम्मी पापा का 10th का सर्टिफिकेट ले लिया या 12th का सर्टिफिकेट ले लिया या राशन कार्ड ले लिया, वहां से हम उठा लेंगे, नहीं, वो नहीं उठाना भाई. जो सरकार को आपने पैन कार्ड के टाइम फाइल अप्लाई करने के टाइम दिया था और जो पैन कार्ड पे आ गया, गलत है सही है वो बात की बात है, वही डालोगे तभी रजिस्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा. Then residential status I have to select. Generally 99% of the people will be resident, right? Only and only those non-residents who are staying outside India and they are applying PAN from outside India, उनका database जो है Income Tax Department under non-resident रखता है, right? There is an international taxation wing of Income Tax Department जिसके पास सारे non-residents का चिट्ठा पट्टा है. So जो पैन उनके पास होगा, only that person is a non-resident. So generally many of us do what, हम यहाँ पे हैं, suppose करो जैसे निधि मैम यहाँ पे हैं, अब मैम को ऑफर आ गई यूएस से, ठीक है जी, कि वहां पे आ जाओ आप एज अ टीचर. तो अभी तो मैम रेजिडेंट है, इनका जो पैन स्टेटस है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ टुडे इज रेजिडेंट ओनली. अब मैम कह रहे हैं कि हम तो चुप चुप निकल जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना ही नहीं है. मैम चले गए, साल 2 साल बाद ये जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, प्रैक्टिकली तो शी विल बी नॉन रेजिडेंट, नंबर ऑफ स्पेस एंड एवरीथिंग, राइट? बट हर पैन डाटा इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टिल विल शो हर एज अ रेजिडेंट, राइट? So basically it's our responsibility when we move from India to outside world, right? We move outside India, then we have to declare this to our income tax department कि भाई हम अब हम नॉन रेजिडेंट होने वाले हैं, तो आप काइंडली हमारा जो पैन कार्ड है वो नॉन रेजिडेंट के स्टेटस में डाल दीजिए. बिकॉज द मोमेंट इट इज पुट इनटू नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस, मेरी सारी की सारी इनकम टैक्स फाइल जो है, it moves from the normal jurisdiction to the international taxation jurisdiction, right? So I will start getting notices on my foreign address, right? My government of India will start speaking with the government of that country where I am living. If any
consequences arises, तो वो वहां पे जा पूछना अलाउ, उनके पास जो डबल टैक्सेशन ट्रीटीज हैं और अदर ट्रीटीज हैं उनके अधीन दे हैव अ राइट टू इंक्वायर अबाउट मी, what I am doing there, what kind of incomes I am earning, they have all that right? So that's why it is required कि वो वहां पे करें, right? So we have to basically have to fill this, and once I fill this registration form, there is a verification, mobile number, email ID वो पूछेंगे, वो आप अपना डालिए, उस पे OTPs आएंगे, and then you will finally get a registration done. You will get an email on your mail ID which you have mentioned for verification. You click that, and your ID has been created. Once your ID has been created, you have to go back to this page. You have to go back to this page, और यहाँ पे ये जो लॉगिन हेयर लिखा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है. जब आप लॉगिन करेंगे, तो this is the page which will come forward. This is the page which will come forward. So you have the user ID. Please note, user ID सबका same ही होता है. That user ID is basically the PAN of that person. So my PAN number is going to be my user ID. It's a default. It's a default, right? No complexity, no second thought. My user ID is going to remain the PAN number. Password जो आपने तब चूज किया होगा वो password डालिए, captcha डालिए, and you log in. The moment you log in, this is the first page which will come in front of you. This is the first page which is going to come in front of you. Up there on the right hand side you have a logout button जो yellow में marked है. Along with this it is your status is written individual और उसके साथ आपका नाम लिखा होता है welcome so and so, right? You get all these kind of tabs. अगर हम देखते हैं तो ये जो green में हो रखा है dashboard, my account, e-file, e-proceedings, e-निवारण, compliance, work list, profile settings. राइट, डैशबोर्ड मेरे सामने इस टाइम पे खुला हुआ है. यही इंटरफेस हमें दिखता है जब हम ये वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, राइट? ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ वैसे ही उन्होंने लिखा हुआ है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने करनी है. अदरवाइज आई हैव टू गो टू दिस थर्ड टैब ऑफ ई फाइल. थर्ड टैब ऑफ ई फाइल पे मैंने जाना है और वहां पे मुझे उसको क्लिक करना है. जैसे ही मैं ई फाइल पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न पे ले जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न पे ले जाएगा. तो नाउ आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय, आई हैव टू फाइल द रिटर्न. सो माय पैन, सम ऑफ द डाटा हियर विल बी ऑटो फ्रीज. ऑटोमेटिकली यहाँ पे डला होगा तो पैन मेरा वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा. असेसमेंट ईयर मुझे सिलेक्ट करना है. अब हमने कौन से साल की रिटर्न फाइल करनी है? असेसमेंट ईयर 21-22. Let me just share the 1 minute. Just my direct share. Is the presentation visible, ma'am? Yes, sir, visible. Right. So which ITR form I have to file? I have to file ITR 1. Which assessment year? As of today, it is assessment year 21-22, क्योंकि अब 31 मार्च क्रॉस कर गई ना. और असेसमेंट ईयर 2021 का जो पीरियड है वो अभी निकला है 30 मई को. एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दे रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू फाइल योर ओल्ड रिटर्न, वो अभी 30 मई को खत्म हुआ है. सो आज 3 जून को सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट ईयर 21-22 की मैं आईटीआर फाइल कर पाऊंगा. तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर में मुझे वो 21-22 सिलेक्ट करना है. आईटीआर फॉर्म कौन सा मेरा है? 1, उसको सिलेक्ट करना है. फाइलिंग टाइप वी ऑल नो 139(1), 139(4), 139(5), ओरिजिनल, रिवाइज, बिलेटेड, वो पड़ा हुआ ना, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है. तो अभी तो मैं फर्स्ट टाइम ही फाइल कर रहा हूँ, कोई एरर तो हुआ ही नहीं है, तो मेरी ओरिजिनल रिटर्न है. राइट. सबमिशन रिपोर्ट आई एम प्रिपेयरिंग इट ऑनलाइन. बीइंग अ सैलरीड एम्प्लॉय it is very comfortable, so I have to submit it, prepare and submit online. ऑनलाइन ही प्रिपेयर करूंगा और ऑनलाइन ही मैं उसको सबमिट कर दूंगा. राइट. अब इसके नीचे भी अगर आप देखेंगे, जब हमने ये इंटरफेस खोला, इसके नीचे भी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दे रखी हैं आपको. राइट. सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस व्हिच दे हैव ऑलरेडी गिवन अस. कहता सम डाटा विल बी प्री-फिल्ड. पैन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इट शैल बी प्री-फिल्ड. एड्रेस, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल
ये सब प्री फिल्ड होंगे, क्योंकि ये सब जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी उस टाइम पे ऑलरेडी दे दिया था। टैक्स पेमेंट, टीडीएस, टीसीएस, ये सब भी प्री फिल्ड होंगे। फॉर्म नंबर 26 से वो अपने आप प्री फिल कर लेगा। डिटेल्स ऑफ सैलरी, इनकम, अलाउंसेस एंड डिडक्शन शैल बी प्री फिल्ड, क्योंकि फॉर्म 24Q क्या होता है? इट्स द टीडीएस रिटर्न फॉर्म व्हिच इज फाइल्ड बाय योर एम्प्लॉयर। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, इनके जो एम्प्लॉयर है जैसे कॉलेज, तो कॉलेज जब मैम को सैलरी दे रहा है तो अगर उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो कॉलेज जो है वो एक टैक्स डिडक्ट करेगा और उसका फॉर्म 24Q रेगुलरली क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा। वो वाला डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर मैंने पिछले साल में कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखी है तो वो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी भी प्री फिल्ड आ जाएगी कि रेजिडेंशियल थी, कमर्शियल थी, लेट आउट कर रखी थी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, वो पहले ही प्री फिल्ड आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? वेरी इजी। गवर्नमेंट तुम्हारे लिए पहले ही काफी चीजें प्री फिल्ड करके लेके आ रही है। जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश डाटा है वो फ्रेश डाटा ही वो पिक करेंगे। डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट इनकम अगर कोई 26 में आ रखी है जिसमें टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो भी वो डाउनलोड प्री फिल्ड ही वहां पे डाल देगा। टैक्स रिलीफ अगर हमने कोई ऑलरेडी 24Q में क्लेम कर रखा है, वी ऑल नो टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), राइट? टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) क्या था? वो एरियर्स ऑफ सैलरी, ग्रेचुटी, तो उसके लिए मैम ने आपको पढ़ाया होगा कि 89(1) में आपने उसका रिलीफ क्लेम करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी तो भाई अगर इस साल एरियर्स मिले हैं तो मैं जिन सालों से वो एरियर पर्टेन करता है उसकी रिकम्पुटेशन करूंगा, ऑल दैट स्टफ। तो वो भी यहाँ पे अगर हमने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्म 24Q जब मेरा टीडीएस डिडक्ट कर रहे थे एम्प्लॉयर, उस टाइम पे वो इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। और प्लीज टू रिमेंबर, अगर वो उस टाइम पे मैंने नहीं दे रखी 89(1) का रिलीफ, अगर मैंने उस टाइम पे नहीं दे रखा बट अब क्लेम करना चाहता हूं, जब आपके मम्मी पापा आपके सामने फॉर्म 16 लेकर आए, उसकी बाइफर्केशन लेकर आए, तो आपने देखा कि भाई उसमें बेसिक सैलरी है, उसमें एचआरए है और उसमें एक एरियर्स भी डल रखे हैं, तो आपने झट से ही पापा को पूछ लिया कि पापा एरियर्स हैं, मम्मा को पूछा एरियर्स हैं, तो क्या आपने 89(1) का रिलीफ नहीं लिया? मम्मा कहते मेरे एम्प्लॉयर तो ऐसे ही था, तो उनको कहना टेंशन नहीं लेने का, मैं बैठा हूं यहाँ पे, अब मैं आपको दिलाऊंगा 89(1) का रिलीफ, आप अपनी पुरानी सारी रिटर्न्स ले आओ और ये जो एरियर्स मिले हैं इसकी मुझे बाइफिकेशन दो, इस साल से कौन से पर्टेन करते हैं, पिछले साल से कौन से पर्टेन करते हैं, मैं करके देता हूँ आपको कैलकुलेशन। रूल ऑफ द लैंड विल रिमेन द सेम, मैं आपसे 10% ऑफ द रिफंड क्लेम करूंगा एज माय स्टाइपेंड, राइट? तो रूल वही रहेगा, मैंने 10% आपसे अपना चार्ज लेना है, ठीक है जी? तो मुझे वो याद रखना है, अगर 89(1) का रिलीफ नहीं फिल्ड किया हुआ और इन केस कहीं पे 89(1) का रिलीफ मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे अब उसको डालना है और उसके लिए याद रखना फॉर्म नंबर 10E फाइल होता है। अगर आप वो फॉर्म नंबर 10E नहीं फाइल करेंगे, वो भी मेरी स्लाइड का पार्ट है, वो मैं दिखा दूंगा, अगर फॉर्म नंबर 10E नहीं फाइल करेंगे तो देन दिस 89(1) रिलीफ जो मैंने क्लेम कर रखा है इसका डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा कि आपने एरियर्स का रिलीफ तो क्लेम कर लिया बट यू हैवंट फाइल फॉर्म नंबर 10E। सो ऑल दो सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी रिटर्न में एरियर्स आ रहे हैं, सो प्राइमरली इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अगर उनको कहीं पे भी वो 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन के कारण कोई एरियर्स मिल रहे हैं तो उनको फॉर्म 89(1) का रिलीफ लेना है, राइट? लास्टली बैंक अकाउंट डिटेल्स विल बी प्री फिल्ड, लास्ट ईयर से वो पिक कर लेता है, अगर कोई चेंज है तो बता देना आप। एंड वेरिफिकेशन डिटेल्स भी जो है वो प्री फिल्ड आएंगी, अगर तो मैं खुद ही वेरीफाई कर रहा हूँ तो मेरा ही नाम लिखा आ जाएगा वहां पे प्री फिल्ड, अगर मैंने ऑलरेडी कहीं पे अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को आगे कर रखा है तो और उसका इंफॉर्मेशन पहले ही गवर्नमेंट को दे रखा है तो वो इंफॉर्मेशन मेरे पास वहां पे आ जाएगा। Then now once I do this all this stuff, I my PAN card is there, my assessment here I corrected, my ITR form ITR 1 कर लिया, फिलिंग टाइप कर लिया, सबमिशन मोड कर लिया, ये नीचे मैंने कंटिन्यू का बटन है, नीचे कंटिन्यू का बटन है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये पेज आ जाएगा, ये पेज आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी? ITR 1 ये वही पेज है जो अभी अपने वहां पे देखा था, पहले देखा था, ये सेम, ये फाइलिंग मोड में है,
जब इसको मैं फाइनली सबमिट कर दूंगा और उसका प्रिंट आउट लूंगा तो उस शेप में नजर आएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में नजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि भाई आप ये सब कुछ फिल कीजिए। ठीक है जी, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस उसने ऑलरेडी दे रखी हैं। इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम फाइलर प्लीज गो रीड थ्रू दिस जनरल इंस्ट्रक्शन। इसमें उसने कह रखा है कि आपने बैक बटन नहीं यूज करना है, सारी फिगर आईएनआर में ही लिखनी है, कैलेंडर जो है वो डीडीएमएम फॉर्मेट में है, क्योंकि आउटसाइड इंडिया वो एमएमडीडी फॉर्मेट में होता है, यहाँ पे डीडीएमएम फॉर्मेट में है। ऑल ग्रेड आउट फील्ड आर इधर ऑटो फील्ड और नॉन एडिटेबल, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे पैन कार्ड नंबर है वो पहले प्री फिल्ड आएगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, देयर इज अ सेव बटन, जैसे ये टॉप पे अगर आप देखेंगे देयर इज अ सेव बटन, तो अगर आप सेव बटन पे सेव करते रहे तो इट्स ऑलवेज गुड, क्योंकि वो डाटा आपका सेव रहेगा। प्लीज डू रिमेंबर, हमने इस फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। सो ऑल दो जो आपने अपने पास रख रखे थे, फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, रेंट रसीट्स, डोनेशन रसीट, जो आपने अपने पास संभाल के रखी हुई थी, वो आपने अपने पास ही रखनी है। बस उनमें से डाटा उठाना है और यहाँ पे डाल देना है, इसके साथ कुछ नहीं अटैच करना। इट्स दैट सिंपल, इट्स दैट सिंपल। This is the next page. Once I do that, this is the general information which will come here. पैन कार्ड ऑटोमेटिक फिल होगा, नाम का लास्ट नेम ऑटोमेटिक फिल्ड होगा, फर्स्ट और सेकंड नेम आपने देखना है, आधार नेम आप डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपका प्री फिल्ड होगा, मोबाइल ईमेल नंबर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एड्रेस आपने डालना है। प्लीज टू रिमेंबर, जहां पे भी रेड स्टार मार्क्ड हैं वो आपने डालने ही डालने हैं, विदाउट दैट रिटर्न अपलोड नहीं होगी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, प्राइवेट एम्प्लॉयर हो, सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, वो आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना है। व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न यू आर फाइलिंग, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न यू आर फाइलिंग, देयर आर डिफरेंट सेक्शंस अंडर व्हिच आई हैव टू फाइल द रिटर्न। 139(1), 139(4), 139(5), 142(1), 148, 153A, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शंस हैं। ठीक है, मे बी एट बीकॉम लेवल हम इतने सेक्शन नहीं पढ़ते हैं, बट ये सब सेक्शन से आपको यहाँ पे जो ये फील्ड अंडर सेक्शन लिखा आ रहा है ना, जहाँ पे ये 139(1) लिखा आ रहा है, यहाँ पे जब आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो वो आ जाएंगे। ये वो सबको छोड़ के अभी हमने 139(1) को करना है, अगर हम 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करनी है तो 139(1) विच इज द ओरिजिनल रिटर्न, उसको क्लिक करना है। अगर यहाँ पे मैं बाई चांस बिलेटेड रिटर्न को क्लिक, सॉरी रिवाइज रिटर्न को क्लिक कर देता हूं, तो ये जो नीचे डाटा है इफ रिवाइज डिफेक्टिव, ये जो ग्रे कलर का खाली ब्लैक्स है ना, ये प्री फिल्ड आ जाएंगे, ये प्री फिल्ड आ जाएंगे क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर रिवाइज सिलेक्ट करूंगा तो ये जो पोर्टल है ये मेरा ओरिजिनल रिटर्न का डाटा पिक कर लेगा, दैट इज द रिसीट नंबर एंड द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दैट ओरिजिनल रिटर्न, उसको वो पिक कर लेगा। So once I fill this part A, I move over to the competition part. I move over to the competition part. Now competition में अगर मेरे एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 इशू कर रखा है तो ऑटोमेटिकली दिस 19 लाख फिगर जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिख रखी है ग्रॉस सैलरी, वो प्री फिल्ड आ जाएगी, वहां से पोर्टल अपने आप ही पिक कर लेगा। ठीक है जी। I can bifurcate it between salary as per section 17(1) एंड वैल्यू ऑफ पर्क्स एज पर 17(2), वो मैं बाइफिकेट कर सकता हूं। किसी प्रकार के कोई अलाउंसेस मैंने अब नहीं क्लेम कर रखे, वो क्लेम करना चाहता हूं, तो वो मैं ये जो नेक्स्ट कॉलम है सैलरी, पेंशन, नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा। ये जो सिलेक्ट है यहाँ पे मैं उसको फिल कर दूंगा। ठीक है जी। तो जितने भी प्रकार के, सपोज करो आपके मम्मी पापा ने HRA क्लेम किया था, तब जब एम्प्लॉयर को डिटेल दी उसमें HRA की रेंट रसीद देनी भूल गए, तो एम्प्लॉयर तो आपका फिर HRA एग्जम्पशन नहीं देगा अपने मम्मी पापा को, तो वो अब आपने खुद यहाँ पे डाल सकते हो अगर आप डालना चाहो। तो आप अपना रफ पेपर पे कैलकुलेशन कर लीजिए और यहाँ पे उसको डाल दीजिए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि इसकी इंक्वायरी करनी है तो वो आपको नोटिस इशू कर देगा कि आपने फॉर्म 16 से हटके कोई इंफॉर्मेशन डाली है, उसका हमें प्रूफ दीजिए। ठीक है जी। तो वो अभी हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन लगानी, अभी तो हमने सिर्फ डाटा पंच करना है। मूविंग फर्दर, आई गेट द नेट सैलरी, देन डिडक्शंस, जैसे 40,000 की ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 का असेसमेंट 18-19 का, तो 40,000 की डिडक्शन मिल गई। अगर कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो लेस कर देंगे, प्रोफेशनल अलाउंस है वो लेस कर देंगे, एंड फाइनली वी गेट
income chargeable under the head salaries. Income chargeable under the head salary. Right? So this is one figure. Moving over, I can declare if I have one property, तो ITR form 1 में मैं allowed है. So I can B2 जो है type of house property. I will drop down, type करूंगा residential commercial let out जो है उसकी gross rent received receivable lettable value during the year वो डालूंगा. We all know वो पढ़ते हैं ना SDV value municipal value 22 और 23 में, ठीक है. वो सब आपने अपने रफ पेपर में कैलकुलेट करना ना, यहाँ कुछ नहीं डालना. यहाँ पे तो बस आप अपनी मन की फिक्र डालो जो आपको अच्छी लगे. आपको लगता है 2 लाख रुपए रेंट डालना, 2 लाख डाल दो, जो मन में आए वो डालो यहाँ पे, ठीक है. एक्चुअल जो है वो सब रफ में आपके कैलकुलेट होगा. म्युनिसिपल टैक्स इफ पेड उसकी हमें डिडक्शन मिलती है, रिमेंबर, तो वो हमने यहाँ पे डाल देनी है. सो आई गेट माई एनुअल वैल्यू, आई गेट माई एनुअल वैल्यू. और यहाँ से इफ यू रिमेंबर 30% डिडक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है. तो वो मुझे खुद को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस रेंट रिसीव्ड जो है वो डालना है. वो आप अपने मम्मी पापा से पूछो, बताओ मम्मी पापा कितना रेंट दिखाना है, उन्होंने कह दिया 10,000 रुपये महीना दिखाना है, लिखो जी 1,20,000 यहाँ, बस बाकी कुछ नहीं करना. पापा को पूछना म्युनिसिपल टैक्स पे किया, हाँ जी किया, ये 1,000 रुपया लेस कर दो. तो 1,20,000 माइनस 1,000 रुपया 1,19,000 यहाँ पे आ जाएगा. उस पर 30% का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली निकल आएगा, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है. दिस इज ऑल ऑटोमेटिक, आपने बस एक रेंट की फिगर डालनी है, राइट. सो वंस आई डू दिस देन आई कम ओवर टू द डिडक्शन पार्ट, राइट. सो आई हैव ओनली 2 काइंड ऑफ इनकम्स मैं ITR फॉर्म 1 में फाइल कर सकता हूँ, सैलरी इनकम और 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम. वो मैं फाइल कर दूंगा, ठीक है जी. तो मेरा एक ग्रॉस टोटल इनकम आ गया. अब मैंने डिडक्शन डालनी है. डिडक्शन भी वेरी सिंपल है, सिंपल उन्होंने कहा है कि डाल दो जी जो आपने डालना है. 80C है, CCC है, CCCD है, CCG है, 80D है, DD है, DDB, जितने हमने पढ़ रखे हैं वो सब यहाँ पे हैं, ठीक है. जो आपके मैम ने आपको थ्योरेटिकली सब कुछ पढ़ाया हुआ है डिडक्शन वाला पार्ट पे, वो सब आप जौन सी आपको अच्छी लगती है वो आप डाल दो, नेचुरली जिनका आपके पास प्रूफ भी हो, ठीक है. ज्यादा ही पापा को फंड दिलाने के चक्कर में ज्यादा ही मत फिगर डाल देना, ठीक है, क्योंकि कल फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिस भी आएगा, उसका जवाब तो पापा नहीं देना है, तब तो आपने दिखना भी नहीं आसपास, ठीक है. तो इसलिए वही फिगर डालना जो एक्चुअल है, राइट. सो वंस आई फिल दोस फिगर्स, सो आई हैव ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. 80G की डोनेशंस, 80G की डोनेशन जो है दैट प्राइमरी विल कम फ्रॉम पी-फिल डाटा ओनली, ठीक है. आजकल क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगा दी हैं, ऑल दोस NGOs जो 80G की डोनेशंस लेती हैं उनको अब एक एनुअल फॉर्म रिटर्न फाइल करनी है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ ऑल दोस पीपल हु हैव गिवन डोनेशंस टू देम विद देयर पैन नंबर. तो इस साल से वो सारा डाटा जो है आपके 26 ईयर्स में दिखना शुरू हो जाएगा, आपके 26 ईयर्स में दिखना शुरू हो जाएगा. सो नीड नॉट वरी. अभी हम इससे लास्ट पार्ट जो है वो हमारा 26 ईयर्स है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब वही सब कुछ है जो हमारे सारे राज रखता है, ठीक है. ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू मी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू मी, दोज ऑल आर स्लोली एंड स्लोली कमिंग इन दैट फॉर्म फॉर 26 ईयर्स. So it is a very key document as of today, right. Moving further, I put up all kind of deductions जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस की. So I'm just going through this thing. मतलब इसमें simply you have to fill the digits. जहां पे भी आपको लगता है आपके पापा ने कोई एजुकेशन लोन लेकर रखा है, उसका इंटरेस्ट है, तो आप चुपचाप उसको 80E में डाल दीजिए, ठीक है. जितना इंटरेस्ट उस साल में था उसको आप क्लेम कर लीजिए, राइट. So that all is possible with you, right. So once I do it, so I get this deduction, total deduction मेरी आ गई, ठीक है जी. उसने कहा कि आपने 197 क्लेम कर रखी है, बट हम आपको 175 ही देंगे, राइट. वही कि जैसे मैंने 80C में 1,75,000 डाल दिया, बट मिलेगी तो मुझे 1.5 लाख की ना, 1.5 लाख की. So they have restricted that figure, right. So now I get my total income. Now in this total income, this tax is being computed. This is all automatic, ठीक है. This is all automatic. आपने कुछ नहीं करना, आपने ना कैलकुलेटर ना कुछ नहीं करना, आपने बस स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर लिया था कौन सी ऑप्शन आप ऑप्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसने टैक्स कैलकुलेट करके आपको दे दिया. सो आई हैव टू टोटल टैक्स व्हिच इज देयर इज 5802. दिस इज द टैक्स आई हैव टू डिपॉजिट, राइट. सो
This is the detail of, this is the, now I have my tax calculated. यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम है, यहाँ पे वो हर प्रकार का जो मेरा टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड होगा, मेरे एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट रखा होगा, मैंने कोई एडवांस टैक्स पे कर रखा है, मैंने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रखा है, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये सब कुछ जो आएगा, ये सारी जो फिगर्स हैं टैक्स से रिलेटेड, जितनी भी फिगर्स हैं, आपने अपने 26AS फॉर्म के साथ कंपेयर करनी है। प्लीज डू रिमेंबर, यहाँ पे जितनी भी फिगर्स आ रही होंगी, आपने अपने 26AS फॉर्म के साथ जरूर कंपेयर करनी है। ठीक है, तो लेट मी, अभी बाद में देखते हैं 26AS फॉर्म भी, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, राइट। सो देन आई गेट दिस फाइनली दिस चार्ट, कितना एडवांस टैक्स पे किया, कितना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, कितना टीडीएस है, टोटल मेरा टैक्स कितना बना, वो यहाँ पे फिगर आ जाएगी। और जो अगर मेरा रिफंड या प्लस होगा तो वो मेरा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। लास्ट पार्ट इज पार्ट ई, अदर इंफॉर्मेशन, जिसमें मुझे मेरा बैंक क्लिक करना, डालना है कौन से बैंक में मैंने रिफंड क्लेम करना है, कौन से बैंक में मैंने रिफंड क्लेम करना है। दिस इज द डोनेशन पार्ट विच आई हैव टोल्ड यू, ऑल्दो बिकॉज दिस इज द ओल्ड फॉर्म, तो यहाँ पे तो ये डाटा अभी एम्प्टी है। आने वाले टाइम पे फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स ये सब कुछ प्री फिल्ड आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब एनजीओस को कह रखा है कि ये रिटर्न आप हमें फाइल करके दीजिए। अगर नहीं आता है तो आपको प्री फिल यहाँ पे फिल करना है। यू विल हैव दैट, चाहिए आपने किसी गौशाला में डोनेशन कर दी जिसके पास 12A और 80G की रजिस्ट्रेशन थी, तो यू हैव डोनेटेड 50,000 रुपीज, तो दे विल गिव यू वन रिसीट that Mr. So and so have donated rupees so and so, this donation is eligible under section 80G, और वहां पे उन्होंने एक अपना 80G का रजिस्ट्रेशन का नंबर स्टैंप करके लगाया होगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड है। तो आपने वो डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है। उस गौशाला का एक पैन नंबर होगा, वो उसी रिसीट के ऊपर होगा, वो पैन नंबर को आपने यहाँ पे डालना है। Only and only then you will be eligible to claim this donation, right? We all know there are various kind of donations. If you remember, 100% of the donation amount, 50% of the donation amount, 100% of the qualifying amount, 50% of the qualifying amount. तो भाई वो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा हमें कि हम किस में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, आपने किसी गौशाला को दी तो वो तो है 50% ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट, तो गलती से उठा के उसको 50% ऑफ द टोटल अमाउंट में मत डाल देना। ठीक है, तो आपको नोटिस आ जाएगा। Now these are the basic things which we have to figure out. Just going back to our academic times कि मैंने वहां पे क्या पढ़ा था, उनको याद करके मैंने यहाँ पे डाटा फिल करना है। ठीक है जी, right? If there is any exempt income, like if someone is retiring, तो रिटायरिंग ईयर में if you remember लीव इनकैशमेंट, सैलरी, ग्रेच्युटी, पेंशन, वो सब कुछ मिलता है ना। ठीक है, तो वो सब तो ऊपर नहीं आएगा क्योंकि वो ग्रॉस टोटल इनकम का तो पार्ट है नहीं। वो सब कुछ कहाँ पे आएगा? एग्जम्प्टेड इनकम के पार्ट में। तो देयर इज अ कॉलम जहां पे एग्जम्प्ट इनकम लिखा होगा, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको वेरियस काइंड ऑफ इनकम्स का ड्रॉप डाउन आ जाएगा। आपने सेलेक्ट करना है कि मुझे ग्रेच्युटी मिली थी, मुझे लीव एनकैशमेंट मिली थी, वो फिगर को आपने वहां पे डाल देना है। राइट, एंड फाइनली दिस 80G पार्ट वी हैव ऑलरेडी टच्ड अबाउट, एंड राइट, सो दिस इज हाउ देयर आफ्टर आई हैव टू बेसिकली I have the option to preview it, and then finally I have to submit the return, right? So if there is any error कैसा होगा बेटा? अगर suppose कीजिए कोई red marked, star marked point था, वो आपने छोड़ दिया, तो they will tell you to go back and fill that data information. Once you do that, you have to just submit it, and once you submit it, your return is filed. So it goes back to there, और वहां पे आप वहीं पे ई फाइल में जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि भाई ITR फाइल हो चुकी है। और अगर आपने रिलीफ लेना है तो रिलीफ के लिए आपको 89(1) के लिए फॉर्म नंबर 10E फाइल करना पड़ेगा। यू हैव टू गो बैक टू द ई फाइल टैब, और वहां पे जहां पे आपने पहले ITR फॉर्म सिलेक्ट किया था, आप फॉर्म नंबर 10E सिलेक्ट करेंगे। कौन से साल का फाइल करना है वो करेंगे, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, एंड यू हैव टू क्लिक द कंटिन्यू बटन। सो मोमेंट वी डू कंटिन्यू, देन अगेन अ न्यू फॉर्म ओपन्स जो आपको वो 89(1) की रिलीफ के कैलकुलेशन देता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अनेक्चर 1, 2, 2A, 3, 4 हैं। ये 5 अनेक्चर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अलग अलग पेंशन है, सॉरी एरियर्स ऑफ सैलरी है तो अलग है, ग्रेच्युटी है तो अलग है,
तो वो अलग अलग एनेक्शर्स हैं, तो मुझे सरों पे जाने की लोड़ नहीं। अगर मेरा सिंपल एरियाज ऑफ सैलरी है तो मैं एक एनेक्शर फिल करूंगा एंड आई एम डन विद इट, राइट। और फिल क्या करना है, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू वन, दिस इज द बेसिक डाटा फॉर्म, बेसिक इंफॉर्मेशन, सो I take you through this part, right? So I take you to this part, right? If you remember, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा 89(1) को कभी अपने कॉलेज टाइम्स, जो आपके ये कॉलेज टाइम में अगर आपने इसको पढ़ा होगा, तो यहाँ वो कौन सी किताब होती है हमारी इनकम टैक्स की, मैम कौन सी किताब पढ़ते हैं आजकल हम बच्चे, कौन सी किताब यूज कर रहे हैं? It is by Kalyani Publication. It is वो पुरानी वाली चल रही है ना? हाँ जी सर, वही पुरानी चल रही है। मेरे टाइम पे, हमारे टाइम पे जो 16 साल पहले थी वही होगी। तो बेटा वहां पे कुछ एग्जांपल्स होंगी 89(1) की ना, तो वो ये, तो यहाँ पे हमने वही डाटा ही फिल करना है कि करंट ईयर की रिटर्न हमारी, करंट ईयर की हमारी सैलरी कितनी है विद एरियर्स, विदाउट एरियर्स, लास्ट ईयर की सैलरी विद एरियर्स, विदाउट एरियर्स, तो वो डाटा हमने फिल करना है यहाँ पे। The students have done everything sir, आप जितना करा रहे हैं everything they do. MCM DAV college ranks 1 in commerce, ma'am. Thank you so much. They compete as the college, so I will definitely, I believe that they are well aware. So practically basically जो हमने बेटा वहां पे सीखा है, अब हमने बेसिकली क्या करना है, अपने रफ पेपर में पहले बना लेना है फिगर्स को और फिर यहाँ पे फीड करना है, ठीक है जी। चाहे आप एक एक्सेल पे पहले बना लीजिए, करंट ईयर की इनकम विद सैलरी, विदाउट सैलरी बना लीजिए, लास्ट ईयर की इनकम विद सैलरी, विदाउट सैलरी डाल लीजिए और फिर उन फिगर्स को यहाँ पे करिए। टैक्स आपको वही जैसे आप एग्जामिनेशन टाइम पे या पढ़ने के टाइम पे आप खुद कैलकुलेट करते हैं, वहां पे एक्सेल में आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द टैक्स रिलीफ व्हिच आई एम ट्राइंग टू क्लेम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ना आपको सिर्फ इतना कह रही है कि यू फिल द डाटा, वी विल वेरीफाई इट लेटर ऑन, राइट। तो यहाँ पे जो टैक्स वगैरह है ये मुझे ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे रेदर देन ऑटोमेटिकली वो चीज कैलकुलेट हो जाए। सो दिस इज प्राइमरली इन दोस केसेस ओनली जहां पे रिलीफ आएगा। सो प्लीज डू रिमेंबर, इफ एनीबडी इज क्लेमिंग रिलीफ, फॉर्म नंबर 10 इज वेरी वेरी कंपल्सरी, राइट। सो विदाउट दैट वी कैन नॉट से कि भाई आपको रिटर्न एक्सेप्ट हो जाएगी, आपकी डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगी और आपको नोटिस आ जाएगा कि इतना टैक्स बनता है, राइट। सो द अदर ऑल दिस पेजेस आर फॉर अदर्स आल्सो, लाइक ग्रेच्युटी है, so I'm not touching upon these points. Termination of employment अगर आपकी हो गई है, पेंशन में अगर आपको कोई रिलीफ लेना है तो वो चीज आप टच अपॉन कर लेंगे, राइट। So this is how ITR forms work. ITR forms work, right? So ITR form 1 is this way. ITR form 2 जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी है तो उसको आप टच बेस करेंगे, मतलब जो जो क्राइटेरिया मैंने अगर ITR form 1 वाला नहीं मीट किया तो I will go to ITR form 2, 3, 4 or 5 or 6 or 7. So total 7 ITR forms are there. So that is I have to do. So this is more of theoretical aspect. I'm not touching upon. These are the various kind of ITR forms which are available and we can file it. I'm just touching upon form number 26 AS, right? Now form number 26 AS is very important. So I can do one thing. I can just open one form for you guys. तो वहां से आप देख लीजिए, so here is a form 26 AS. If you guys see, ma'am, are you able to see the PDF? Yes, sir. Right. So this is the form number 26 AS. How it looks like, right? अब ये form number 26 AS कहाँ से बनता है? All kind of information which has been filed by third parties against your PAN, against your PAN. Please do remember, for income tax एक PAN number ही है जो पूरा हथियार है आपके अगेंस्ट। So across countries, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को याद रखा है कि आप हमें कुछ डाटा दीजिए पैन रिलेटेड। अगर आपका पैन उस ऑर्गेनाइजेशन के पास है और आपने कोई ट्रांजैक्शन कर रखी है उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी उस रिटर्न में, अपनी उस इंफॉर्मेशन पासिंग में, दे विल पास ऑन द डिटेल्स रिगार्डिंग योर पैन आल्सो। नाउ द मोमेंट दे डू इट, it will start reflecting in this form number 26CS. This form number 26CS can be downloaded from your Traces site also, right?
और जहां पर मैंने आपको इंटरफेस फर्स्ट पेज दिखाया था ई फाइल वाला, ई फाइल से पहले एक पेज आता है और टैब आता है, उसको अगर आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो वहां पे भी लिखा आ जाएगा डाउनलोड फॉर्म नंबर 26CS। नाउ दिस इज एवरीथिंग, राइट। मतलब अगर एक बेसिक सिंपल इंडिविजुअल की बात करूं मैं, तो उनका 90% डाटा इस 26CS में आया होगा। नाउ दिस 26CS इफ वी लुक अराउंड, राइट, दिस इज द एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। टॉप में आपका पैन नंबर, करंट स्टेट ऑफ पैन, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर आ गया, नेम ऑफ एड्रेस, एड्रेस ऑफ द असेसी आ गया। नाउ पार्ट ए, this is the details regarding the TDS, all kind of TDS which has been deducted against you by your employer under section 192, by other parties under section 194 to 194M, वहां तक किसी भी हेड में आ गया, इंटरेस्ट आ गया, कमीशन आ गया, ब्रोकरेज आ गया, वो सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर नबार्ड की 192 में उसने TDS काट रखा है। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज अ सैलरी इनकम, this is a salary income. So now if you see, there is a total amount paid credited 9,22,000, total tax deducted 87,870. Now this is the TDS which has been deducted, this is the salary which has been given to this person. Now I have to ensure that this TDS is reflected in my ITR also. जहां पे मैंने TDS की डिटेल पढ़ी थी ना, वहां पे इतना TDS लिखना चाहिए ना। Plus my return must also reflect this thing. TDS return, sorry, salary income must also reflect this thing. अगर इससे कोई वेरिएंस है तो वो मेरा फॉर्म 16 उसको क्रॉस कर जाएगा। वो फॉर्म 16 जो है उसको इफेक्ट उसका दिखा देगा कि क्यों है। नेक्स्ट, TDS किसने काट रखा है? यस बैंक ने काट रखा है। दैट इज 194A, इंटरेस्ट ऑन FDR, इंटरेस्ट ऑन FDR। फिर ICC बैंक ने काट रखा है 194A में। अब ये जो दोनों इनकम्स हैं 96,897, 96,897 and 2,51,569, these are my income from other sources, interest on FDR. So I have to declare both these incomes there. So in such a form, ये नहीं कि मैं सिर्फ सैलरी इनकम डिक्लेयर करके काम चला लूंगा, क्योंकि मेरे फॉर्म नंबर 26CS में अदर इनकम्स भी आ रही हैं, तो I have to declare those incomes also in my return. If I'm not going to declare those incomes, it's going to be a defective return. I will get a notice from the income tax that some income have escaped, and they will issue a assessment notice to me. So I have to ensure that under part A, whatever incomes have been declared in my form number 26CS, I have to declare them in my ITR form also. Right? Initially, it was a lot of disturbance, concern for the assessees, but nowadays all these incomes are going to come pre-filled. ठीक है, क्योंकि वो रिफॉर्म उसको बेटर एंड बेटर कर रहे हैं ITR फॉर्म्स को. So now all these incomes are going to come auto-filled in my ITR forms. So need not worry on that. But still, please do make ensure that while filing the returns, these kind of incomes are reflected. Right? Then what other kind of TDS has been deducted? If I say, if you guys remember 15G, 15H, right? That is, I don't want to get tax deducted, or I want to get it at a lower deduction. So that information will come at A1, right? Another, if you remember, there is 194IA. 194IA. That is TDS on sale of immovable property. 1% of the receipt is deducted as TDS. So if you are selling any immovable property during the year, और वो 50 लाख से अधिक है, then the buyer has to deduct 1% TDS. तो वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी. वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी. Suppose you have a house property, you have paid, you have sale consideration of 1 crore rupees. So 1% TDS, that is 1 lakh rupees, will be reflected here. Amount paid credited will be reflected as 1 CR. So the moment it comes here, that means what? I have to declare a capital gain income also. I cannot simply ignore it and go ahead. Well, if you are going ahead, notice is going to come. Right? So anything which is coming here, I have to declare it. Then you guys must be aware, tax collected at source, जिसको हम TCS भी बोल देते हैं बेटा. These days, a lot of TCS provisions are also coming up
from the government side. So वो भी कोई भी ना कोई TCS, जैसे अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, right? Give an example. If you purchase a car and the car cost more than 10 lakh rupees, then your car dealer is going to collect tax from you, right? It's one person, again one person, right? So suppose मेरी गाड़ी जो है 15 लाख की है, तो वो 15,000 रुपए आपसे और लेगा, which will be called as tax collected at source, and he will deposit that 15,000 with the government against my PAN, and it will start reflecting here. Part B में reflect होना शुरू हो जाएगा. So I can claim back that 15,000. That's not an issue. I can claim back that 15,000. But the point here is what? Governments want to identify the financial transactions which I am trying to get involved. पहले क्या होता था? लोग गड्डियां ले आते थे, ठीक है, पार्टी शार्टी कितनी, गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला कि गड्डी आ गई. Now they are basically tagging them. They are just trying to tap each and every individual. So that's why I am telling you, wherever your PAN is being given, please do remember वहां से कोई ना कोई information तो government के पास आ ही रही है. Another information. The part C, detail of tax paid, if any, other than TDS or TCS. So here वो सब advance tax, self assessment tax वो यहाँ पे आ जाएंगे अगर हमने कोई पे कर रखे हैं, ठीक है जी. Another is any kind of refund if आया है हमें, इस साल में कोई रिफंड आया है तो रिफंड की डिटेल आ जाएगी. तो if you remember, if you see, there is this interest column. There is this interest column under part D. Interest on income tax refund is taxable under the head income from other sources. So I have to pick this interest from here and put it in my return. I should not forget it. I should not forget it, right? Then SFT, part E. Again, now this SFT is what basically, this SFT is specific financial transactions. I take an example. If you guys invest in mutual funds, if you guys invest in mutual funds and you have invested for more than 2 lakhs or in equity share, equity market, if you have invested more than 2 lakhs in a year, that broker has to pass on this information to the government of India. You have deposited 10 lakh, more than 10 lakh rupees cash in your bank. Your banker will pass on this information to the government of India that this Amitos have deposited 10 lakh rupees cash in his bank. So said information will start coming here, right? So कहने का मतलब कि ये जो जितनी भी financial, if you have gone outside India and bought air tickets for more than 1 lakh rupees, that information will start coming here because now they have asked the airlines also to pass on the information against the PANs, right? So that information will start coming here. Part F, if you guys remember, it's the वो एक क्लॉज नहीं आया था कि नॉन टैक्स पेयर, जैसे अगर 50,000 रेंट दे रहे हैं अगर आप and you are a non-businessman, still 50,000 रुपए per month rent दे रहे हैं, then TDS has to be deducted, even if I am a non-businessman, right? So there are some new provisions which have come over, wherein they have said that even if I am a non-businessman, non-tax audit person, still I have to deduct the TDS. One of those cases is कि अगर मैं 50,000 रुपए rent per month दे रहा हूँ किसी को, तो मुझे TDS काटना है. वो information यहाँ पे आएगी उस बंदे की, right? Any other, if TDS default is there, that TDS default will come here. So this is the information which will start coming here. So I have to ensure that each and every column which is filled here, उससे related data मुझे punch करना ही करना है, right? So this is how form number 26CS will look like. This is the PDF format which we will be getting. All those people who have to provide information in this, they simply file their annual returns every year, quarterly or periodically, and on the basis of those returns, this information gets prepared, right? So this is a I will say one page on which we will get all the information against my PAN, and I have to ensure that ये जितना भी 26CS में information है, ये सब का सब मुझे अपने ITR form में डालना ही डालना है. I don't have to miss at any point of time, right? And last part I am touching
So this was form number 26CS, which I have shown you practically. So उसी का theoretical aspect मैंने यहाँ पे touch upon किया था, right? And you can just go through it. I will share this presentation also with ma'am. Right? So the way I've made you understood that we have to ensure that this all information gets matched, right? So under form number 16, we have two parts, part A and part B. Part A speaks about the text which has been directed by my employer. Part B gives the detailed breakup of my salary. So this form 16, part A and part B just helped me in preparing my ITR form. From part B, I get that salary amount जो मैंने अभी देखी थी अपने ITR फॉर्म में, वो सैलरी अमाउंट मैं पार्ट बी से उठाता हूँ और जो टीडीएस वाली टेक्स्ट वाली डिटेल है वो पार्ट ए से उठाता हूँ. And my part A is going to match with 26 AS. My part A is going to match with my 26 AS, and this is what I have written here. Right? So this should match form 16A. So if a non-salaried employee है तो form 16A होगा, अगर salaried employee है तो form 16 होगा. So this information will match with my part A. Right? So there is no worries कि वो match नहीं होगा until unless आपके employer ने form 16 manually बनाया है. फिर there is a chance कि वहाँ पे difference होगा. If everything is online, then there is no chance that there will be any error between the form 16 part A and the text which has been declared here. Right? Any doubts on that? So this is, I think, I'm through with it. So this is what is there from my side, ma'am, today. Any questions on this? Any doubts on this? Please do let me know. Thank you so much for such an enriching session. I thoroughly enjoyed it. मुझे ऐसे लगा कि मैं दोबारा स्टूडेंट बन गई हूँ सर. Revising each and every thing was definitely a very important, very knowledgeable session. You must have enjoyed a lot. So before concluding it, let's have a quick photograph of the students please on their video, and then probably have a question and answer session. Yes, students, can you please all the participants are presentation, sir. I will share the presentation also. I would also like to say that the way you explained each and every point in such an easy way, I think filing of income tax return is something which everyone thinks it to be a very tedious job, and everyone is reluctant on this. But after attending your session and listening to you, I think now all have gained confidence and all will start filing. It's my honor. It's my honor. And I request all the students like Sunny Deol कहना होता है कि उससे साढ़े देश की hope हो, right? So hope हो, right? So please like do remember in US every second or third person is an entrepreneur, but when it comes to India we have very less entrepreneurs, and one of the reasons has been that we are not practically good at. US, Canada knows कि India जो है वो practically बहुत strong है. Right, so that's why there is a lot of brain drain happening from India to outside world, right? But when it comes to entrepreneurship, when it comes to the practical aspects, it becomes very difficult. क्योंकि उनको लगता है कि Indians ना सिर्फ वो जुगाड़बाजी आती है उनको, right? So I will always say कि be smart, right? Go the smart way, learn smartly. Like ma'ams are putting up their efforts to teach you academically, right? But out of that, to always do drive something smart things. It's smartly में इसको कैसे समझो? Right, because it's a normal thing. The more we try to learn smartly, the more it will start getting remembered in our mind. Because हमें याद रहेगा कि हाँ यार मैंने उस website में ऐसा कुछ किया था. So it will always get remembered. Right? So please, best of luck to all the students, and I hope that you guys are going to be strong leaders for our country down the line, and look forward to you all. I request all the students to kindly go back and just own your video so that we can have a group photograph with sir. Let's capture these important moments of the life. Please turn on the video. Yes, students, please turn on. Shushmita, I can see Meta there. Students, please turn on Riddhi.
please smile, girls. You look so beautiful. Please have a smile on your face. Yes, ma'am, is done. Thank you. Thank you all. Yes, students, in case if you have any doubt, please you can ask her. You can raise your hands. Anything which is not clear? I think Everything is clear. So sir has explained each and everything at his own, so students don't have any doubt in this. Sir covered each and every point, I think, which we can have doubt in while filing of income tax return. Ma'am, should I continue with the formal vote of thanks? I think you should. yes, I think you can go with it. On behalf of our principal and convener of today's session, Dr. Nisha Bhargava ma'am, co-convener Mrs. Nidhi Sharma ma'am, coordinator Ms. Jyoti Soi ma'am, and myself, I hereby extend a formal vote of thanks to our resource person, CA Amitosh Singh, ex-chairman, Chandigarh branch of NIRC, ICAI, for giving such an informative and explanatory talk on problems and prospects of e-filing of income tax returns. Sir, you explained the complicated terms about new tax regime very coherently. Explaining about the basic differences between both the tax regime has indeed made participants aware that as an individual and HUF, a person is still free to choose any of the old and new tax regime according to their own convenience. Sir, your student-friendly approach in putting forth all the essential guidelines and process of e-filing through the presentation of live e-filing portal is praiseworthy and highly appreciated. I am sure our students have benefited from your expertise on the topic as well as from the entire session to enhance their online application of financial modalities, specifically income tax return. Sir, my sincere gratitude to you for having spared your valuable time to be with us today. We are also thankful to the members of the staff who have attended the session. Special thanks to our worthy colleague, CA Jyoti Soi ma'am, for having arranged with CA Amitosh Singh to conduct this session. Last but not the least, a big word of thanks to our over 100 enthusiastic students who have actively participated in the program today. As now you are armed with the practical knowledge also, I hope this would enhance your interest in the subject too. I wish all the success to you in the life. Thank you once again to all of you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot for having me. Thank you once again, sir. Thank you for this amazing session. Thanks a lot.